सो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा मद्य और मदान्य। अब जो टॉपिक है वो है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म। अल्कोहल क्या है? इट इज़ अ कलरलेस volatile flammable liquid. It is a colorless volatile flammable liquid which is produced by the natural fermentation of sugar. The term alcohol originally refers to the ethanol, the intoxication constituent in alcohol beverages such as spirits, urine, champagne, and beer. It is classified as CNS depressant. अल्कोहल कंटेंट इन बीवरेजेस, स्पिरिट होता है 35 से 50%, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, इन सब में। वाइन होती है 10 से 15%, शैम्पेन होती है 10 से 13%, और बियर्स होती है 4 से 8%। अल्कोहल इन टॉक्सिफिकेशन, इट इज़ अ कंडीशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। जनरल साइन है लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इनएबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज, डेंजर टू हिमसेल्फ और अदर। डायग्नोसिस कैसे करोगे? जब वो चल रहा होगा तो वॉक एंड टर्न टेस्ट, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्नस टेस्ट, HGN, one leg stand test, Romberg balance test, finger to nose test. When a person consumes alcohol to full effect may take some time to become apparent depending on number of factors such as consume amount, rate of consumption, body weight, empty or full stomach. They are somewhat predictable stage of alcohol intoxication through which the individual may progress as their drinking continue. Severity, सोबेरिटी, सब क्लिनिकल इंटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं यूफोरबिया, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, स्टपर, कोमा, डेथ। स्टेज 1 सुपैरिटी, sobriety, SOBRIETY, subclinical intoxication at a blood alcohol concentration BAC of 0.01 to 0.05. The individual is unlikely to appear intoxicant through certain tests may detect impairment depending on the individual judgment and reaction time may be slightly impaired. One drinking will generally result in BA within a range for both males and females. Euphorbia, second stage of intoxication referred to as euphorbia, occur between 0.03 to 0.12 ABAC, which may correspond to roughly 1 to 4 drinking for a woman or 2.5 for a man depending on size. Next है, in this stage the individual may feel more confident, be more talkative and animated, and may feel slightly euphoric. Inhibition also begin to decline. Most people refers to this stage as beginning tipsy, while many of them effect of the alcohol may be pleasurable to the drinker. The negative effect of alcohol such as impaired judgment, memory and coordination begin to appear at this time as well. As in this stage a person motor response may be significant more delayed than the lower BAC. Excitement, having a BAC between 0.09 to 0.25, the individual may begin to experience emotional instability, a lack of critical judgment, and a significant delay in the reaction time. Slurred speech, impairment, perception, memory may occur, loss of the balance, and the dizziness, nausea, and vomiting. These around the person will likely notice that he or she is visible drunk. Confusion, sometimes when a BAC level is 0.18 to 0.030 is the confusion stage characterized by the emotional and disorientation. Cephalic and disorientation coordination is markedly impaired to the extent that the person may not be able to stand up, may stagger if walking, and may be very dizzy. Those in the stage of intoxication are highly likely to be forgot things that happened to or around them, blacking out, losing memory of events that occur while drinking without actually passing out can happen at this stage. In addition, a person may have and markedly increased pain threshold, meaning they could injure themselves and not feel the effect until later. Stupor can occur at the BAC between the level approximately 0.25 to and 0.040. Sometimes in this stage is extremely intoxicated and is dangerous
territory, they are at great risk of alcohol poisoning and death. They have likely lost of significant amount of motor function and are not responding to stimulus or responding very slowly and may be unable to stand, walk, support, or completely passed out, unable to voluntarily control body function, vomiting sometimes in this stage, should get medically help. Individual left to sleep it off may end up suffering from slowed breathing or respiratory arrest, or may choke on their own vomit. Other risks include hypothermia, arrhythmia, and seizures. The coma, a person which have reached BAC of about 0.35 to 0.45 is at significant risk of lapsing into a coma. Respiration and circulation are the severely depressed. Motor response and reflexes are markedly decreased, and the person body temperature and drop. The person who have reached this time is at the risk of death. At about 0.45 BAC or above, many are unable to sustain their vital life function, and the risk of respiration arrest and death is significant. Death may be possible at lower BAC treatment. Alcoholism. Alcoholism are of two types: the acute alcoholism as well as the chronic alcoholism. The alcohol are of two types: the ethyl alcohol and methyl alcohol. Ethyl alcohol acetyl alcoholic डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एक्ट करता है, जिसे एसिटल एल्डिहाइड बनता है। उसके बाद एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एक्ट करता है, जिससे एसिटिक एसिड बनता है। एक्सेस अमाउंट में एसिटल एल्डिहाइड जो होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद अमाउंट जो हो गया इंक्रीज हो गया, और जब ये एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस बनता है एसिटिक एसिड, नो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन occurs. Symptoms of increased acetyl aldehyde: severe headache होगा, nausea होगा, vomiting होगा, abdominal pain होगा, diarrhea होगा, flushing face होगा. Note: in chronic patients always greater dose of alcohol is given as him tolerance power is more. जैसे उसकी जो tolerance power होती है वो ज़्यादा होती है. 3 phase हैं अल्कोहलिज्म के: एक्साइटमेंट, इनकोऑर्डिनेशन और कोमा. एक्साइटमेंट में 50 से 150 mg, ठीक है. इनकोऑर्डिनेशन दो में डिवाइड किया गया: इनिशिएट मोड और स्लीपिंग मोड. इनिशिएट में सीएनएस एक्टिवेशन होती है, जिसमें 150 से 300 mg की डोज होती है. स्लीपिंग मोड में मोर देन 300 mg, और कोमा में डीप स्लीप मोड होता है. कॉमन ड्रग जो होती है इसमें यूज़ की जाती है डाइसल्फाइन, जो इनिबिट करती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को. डोज होती है 200 से 250 mg. ये तभी देनी चाहिए, प्रिकॉशनली देनी चाहिए, जब एक्सेस अल्कोहल का कंजम्पशन हो जाए ऑन द फेटल कोऑर्डिनेशन. आफ्टर इनटेक ऑफ मिथाइल मिथाइल मेट्रोजिल एल्कोहल शुड बी प्रोहिबिटेड कंजप्शन. डोज होती है 200 से 250 mg. आशा वरिष्ठ होने देना चाहिए 8 से 10% अल्कोहल जब हो जाए. ट्रीटमेंट होना चाहिए, गैस्ट्रिक लावेज कर देना चाहिए. नॉर्मल डिहाइड्रेशन, एसिडोज बनता है बॉडी में, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, जिससे कि एसिड बनता है हमारी बॉडी में. 45 से 90 मिनट तक नॉर्मल वर्किंग रहती है. उसके बाद लीवर डैमेज शुरू हो जाता है. एक्यूट हेपेटोमेलर्जी होगा, फैटी लीवर होगा, क्यूरेबल रिवर्सिबल कंडीशन हेपेटाइटिस, एब्डोमिनल पेन और डायरिया, जिससे कि क्लोरिक अल्कोहलिक पॉइजनिंग डेफिशिएंसी हो जाएगी. इससे हम इसके जो सिम्टम्स हैं वो है माल न्यूट्रिशन, इम्प्लांटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी में, आरबीसी फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी, बीबी ट्रिपल बी क्रॉस हो जाएगा, बर्निक्स यानी कि ब्रेन टिश्यू डैमेज होने लगेंगे. ट्रीटमेंट हम इस पर विटामिन B6 की टैबलेट्स देते हैं, फॉलिक एसिड देंगे और मैग्नीशियम देंगे. उसके बाद इन कोमा कंडीशन विटामिन B1 थेरेपीज इंजेक्टेड इन द नॉर्मल सलाइन में देंगे, और DNS देंगे, इंसुलिन देंगे, इंक्यूबेशन देंगे. मिथाइल अल्कोहल एल्को डिहाइड्रोजनेज जो कि फॉर्म में एल्डिहाइड बनाएगा, जिससे कि फॉल्मिक एसिड बनेगी. ये कच्ची शराब से होती है जो मोस्ट फैटल होती है. कॉकटेल मेडिसिन है थाइमाइन, नैलोजीन. यहाँ पे ये ख़त्म हो गया.
इसमें थोड़ा सा और है, वो ये है कि अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें कि क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एल्कोहलिज्म, कई तरीके से अल्कोहल दे रखे ना। सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जैसे इथाइल पॉइजनिंग, सीवियर एल्कोहलिक, ऐसे करके दे रखे हैं। वो तो एक शॉर्ट था, वो हो गया, ठीक है। अब ऐसे करके देख लेते हैं। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ acute alcoholism, patient must be kept warm to treat hypothermia. Patient is made to lie on the side to prevent aspiration. Gastric lavage with alkaline solution within the 2 hour of ingestion. 1 liter of normal saline on 10% glucose with 15 unit of insulin to check hypoglycemia. Thiamine 100 mg to prevent neuropathy. Respiration support. Dialysis may be required. 1 liter of normal saline of 10% glucose with 15 unit of insulin to check hypoglycemia. Thiamine 200 mg to prevent neuropathy. Respiratory support. Dialysis may be required. Some systematic effect of chronic alcoholism: physically, the lack of personal hygiene, gastroenteritis, wasting, loss of appetite, neuropathy, sterility, impotency, fatty change in the heart and the liver, tremors, insomnia, intermediate infections, mental loss, loss of memory, impaired power of judgment, moral, it manifests as crime, domestic violence and suicide cases. Treatment for chronic alcoholism and its symptoms: withdrawal of alcoholic drink, anti-abuse treatment, disulfiram dose 250 to 500 mg per day for 1 to 2 weeks, followed by the maintenance dose of 250 mg per day at the bedtime. metronidazole, nutrient and vitamins, thiamine हम दे सकते हैं 50 से 100 mg डेली दे सकते हैं। डाइजापैम दे सकते हैं 40 से 80 mg पर डे, इज डिवाइडेड इनटू डोज। इथाइलिन पॉइजनिंग में या सीवियर पॉइजनिंग में, अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन में इथाइल और अल्कोहल पॉइजनिंग इज अ सीरियस समटाइम्स डेडली consequence of the drinking large amount of alcohol in a short period of time. Alcohol poisoning can also occur when adult or children accidentally or intentionally drink household product that contain the alcohol. A person with alcohol poisoning need immediate medical attention. Alcohol is a form of ethanol which is known as ethyl alcohol. is found in alcoholic beverages, mouthwashes, cooking extracts. Some medications are certain household products. Ethyl poisoning generally result for the drinking too many alcoholic beverages, especially in the short period of time. Binge drinking. A major cause of alcoholic poisoning is binge drinking, a pattern of heavy drinking when a male rapidly consumes 5 or more alcoholic drink with 2 hours, or a female rapidly consumes 4 drinks within 2 hours. An alcohol binge can occur over hour or last up to several days. Risk factor. A number of factors can be increase the risk of alcoholic poisoning, including size, weight, overall health, individual tolerance level, recent food take, empty stomach, combination of alcohol with other drinks, percent of alcohol is consumed, drinks rate and amount of alcohol consumption. Sign and symptoms: confusion होगा, vomiting होगा, hypothermia होगा, slow breathing होगा, irregular breathing होगा, cyanosis, pallor, unconsciousness, seizures, ये सब होगा. Complication: an unconscious person who should not be felt alone. Alcohol poisoning affect the way the gag reflex works. Sometimes with alcohol poisoning may choke on his or her own vomit and not be able to breathe. Severe dehydration हो जाएगा उससे, ठीक है. उसके बाद सीजर, ब्लड शुगर लेवल डाउन होने लगेगा. उसके बाद हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर में ड्रॉप सो लो टू इट कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा. इरेगुलर हार्ट बीट. अल्कोहलिक पॉइजनिंग कॉज द हार्ट टू बीट इरेगुलर, वीन स्टॉप. ब्रेन डैमेज होने लगेगा. हैवी ड्रिंकिंग से ब्रेन के जो रिवर्सिबिलिटी आएगी, जिससे कि टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगा, जिससे कि ब्रेन डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है डेथ का. मिथाइल पॉइजनिंग, इट इज़ अ टॉक्सिफिकेट ड्यू टू द मिथेनॉल. इट्स पॉइजनिंग कॉमनली अकर फॉलोइंग द ड्रिंकिंग ऑफ windshield washer fluids. This may be accidental or done purposefully in an attempt to die by suicide. Methanol toxification may also rarely occur through the extensive skin exposure or breathing in fumes. Methanol has a high toxicity in the human as rated as 10 ml of pure methanol when drink is metabolized into formic acid, which can cause permanent blindness by destruction of optic nerve. 15 ml is potentially fatal, although the median lethal dose is about 100 ml. 1 to 2 ml per kg body weight of the pure methanol. Ethanol is sometimes denatured and made poisonous by the addition of methanol. This result is known as methylated spirit, MGTS. British use or metho, Australians likes. The sign and symptoms: initial sign of methanol toxification include CNS, depression, headache, dizziness, nausea, vomiting, confusion. Subsequent large dose causes unconsciousness or even death.
The initial symptoms of methanol exposures are usually less severe than the symptoms from the ingestion of a similar quantity of ethanol. Once the initial symptoms has passed, a second set of symptoms arise from 10 to 30 hours after the initial exposure. They may include blurring or complete loss of vision, acidosis. These symptoms result from the accumulation of toxic level format in the blood and may progress to death by respiratory failure. The treatment are as follows. Methanol poison can be treated with fonoprazole or, if unavailable, ethanol. Ethanol is considered as antidote for the methanol. Both drugs can act to reduce the action of ethanol dehydrogenase or methanol by means of competitive inhibition. Ethanol, the active ingredient in alcoholic beverages, act as a competitive inhibitor by more effectively binding and saturation by the alcoholic dehydration enzyme in the liver, thus blocking the binding of methanol. Methanol is excreted by the kidney without being converted into the very toxic metabolite formaldehyde and the formic acid. Alcohol dehydrogenase instead enzymatically convert the ethanol to acetaldehyde, a much less toxic organic molecule.